This time I'm not going to ask you, I'm just going to tell you that the gentleman on the right is Horatius. He was recently quoted by Tom Cruise in Oblivion. Horatius was the soldier who was standing when the army of Clusium invaded Rome. Clusium एक था, उसकी आर्मी जो थी वो रोम के अंदर आई. 8,000 soldiers he had, 8,000 सिपाही थे. And Horatius was the only person who was standing there alone to fight with that army. He was still standing, he was severely wounded, but he continued to stand there and the army had to go back. He single-handedly defended all the fort, and the beauty is this one. Then out spoke brave Horatius, the captain of the gate. Horatius se pucha, captain of the gate, to every man upon this earth, death comes sooner or later. Everyone dies. And how can man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers, for the temples of his gods? And I think that's what we should remember. That there are good purpose to live for all our lives. यदि हम लोग सही purpose अपने लिए चुन लें, सही purpose अपने लिए decide कर लें, from this moment on, we can find a real meaning for our lives. We can make it really meaningful. We can make it really what we can call as the life of human excellence. She especially come to listen to Dr. Chinmay Pandya, and she loved that lectures. What keeps you positive all the time? Well, I think really the spiritual side of all our cultures, of all ethnic groups, especially the immigrant groups that come to the United States, is something that keeps us grounded and makes us reflect on our human situation. And I think that that in all cultures, as we see here with this presentation, it's a way to create a national consciousness that benefits society in general. I think what we see happening throughout the world is a classic example of conflicts created by governments and not by the people. If you were to go into any of these areas that are conflicted and talk to real people, you will see that they want what everybody else wants, and that's peace. They want to take care of their families. They want less conflict. But it's the governments that don't allow that representation of the regular people that enter into these conflicts that hurt the world order. That's why, although democracies are not perfect, but democracies are a way to allow that the regular people who desire peace can put leaders there that promote that type of peace. Since he's representing us, he has been blessed with height that takes him to take a look from 6'5". So how does the world look from up there? Oh, it's a great view. I mean, you're always in the action, and you could always see what's going on. So very good in terms of the view and everything. And talking about today's event organized by Gayatri Parivar of Long Island, in general, how do you feel these kind of activities, do they help in the society at large? Well, I think they're inspirational and refreshing at the same time, especially to celebrate Indian culture and Indian thought. And I think the message today from our excellent guest and speaker was one of perseverance and persistence, and also knowing that while taking care of yourself is one thing, but also looking out for everyone else in the play of life, that we have a lot of influence and a lot of dedication to the community, and many of the things that we do affect others. And I think he used some excellent examples of people that have persevered even though they were disabled, but have gone on to do great things to influence many people and to inspire people to reach their goals. Dr. Pandya, allow me to request you to share a little bit about your background. Some of our viewers have also heard Dr. Pandya Sahab, your father, and share with me, growing up, looking at him so active in activities which takes his focus beyond family. How was it? Did you ever felt that you were not getting as much attention as a son would expect from his father? Good question. Actually, I was born and brought up in the ashram, Shantikunj. Shantikunj is the headquarter of All World Gayatri Parivar. And the days actually I was growing, I saw Puja Gurudev and Vandaniya Mataji also there up to at least my teenage years. Very different environment altogether. So it's been a interesting journey for me, at least, that I grew up in an ashram, then had an opportunity to complete my medical graduation with the blessing of Gurudev,
and then to work in London for 9.5 years. Last job I held was as the consultant in older people services in London, and looking after the Alzheimer's disease treatment service. The question that you asked, that how is it actually getting the attention, when we were growing up, Gurudev and Mataji were there, and being next to them was like standing next to a radiating sun. And when you are next to such a divine personality, concept like worldly relations, blood relations, they probably lose their meaning completely. So I think we never had that feeling of, because there was so much love and affection already given to us without even being asked for, that there was never actually felt that we probably missing anything. In fact, we were getting a lot. Actually, what you are saying is probably not easy for many people to understand, and let me just set a few things in perspective. Long ago, Dr. Saab Praveen Pandyaji, Pranav Pandya, I'm sorry. Dr. Pranav Pandyaji was due to come to America to pursue his further studies and his profession as a doctor. And then Puja Gurudev ji, in a way, he stopped, or rather he asked him to have another role for himself. But in your case, you were given the opportunity to go and work in London. So there is a little difference there. Now, having been in London as a doctor, what was it that influenced you to come back, or was it always there at the back of your mind? I never wanted to go to London, and there was not a single moment in my life where I ever felt that I'm going to stay. It's such a comical situation for me at the moment also, because I lived there for so long. People, whenever I apply for the visa, actually now, because I never applied for British citizenship and returned back with my Indian passport back to India, always people think that you probably already got it, and why you are applying for the visa. So there was not a single moment when I ever felt that I'm going to stay in London. Always wanted to go back. How it went for 9.5 years is still a mystery for me, that how I continued for so long, in spite of my best attempts not to do it. I think the experiences that I learned by staying there in London was remarkable, because I grew up in an ashram environment, and until I reached to the MBBS medical college, I never had a pair of shirt and trouser with me. Always had an ashram upbringing. So to see the other side of the world, at least to the fullest, because I worked in Chelsea Westminster Hospital, lived in Chelsea, which is heart of the London itself. So I think to that experience, I would have probably never received if I never had the opportunity to go to London. Now, looking at the time question, switching to another role as Vice Chancellor of an important university in India, and you not only you look young, you are young. So having that kind of responsibility of shaping up lives of many students with a little bit of cultural light, how do you see yourself probably preparing on an ongoing basis to do the best as Vice Chancellor of this university? First of all, I am pro Vice Chancellor. Vice Chancellor is Mr. Sharad Pardhi. This university is unique, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. Gurudev had a vision, and in fact he had a philosophy. He said the education is only providing us the literacy and employment. It's not giving us the values. That it's not necessary that someone would go to university and return being a better individual. He said it could only be provided if we provide the education for free and with value. So this is a unique campus, fully residential campus, capacity to hold 1500 students at a time. It's a 90-acre campus, and we provide education to the students who cannot financially sustain themselves but academically worth. So we work on a concept of providing admitting students with no tuition fee. There is no concept of taking any tuition fee, and because society contributes for their education, and that's why the education is subsidized for them,
all the students return it back to the society by working free in a form of 3 months social internship. So all the students, they go to the villages of India, work there for free, provide the social service before they get their certificate. So it's established on a very unique model, and it's a privilege for all of us who are part of that mission. Now we've got 57 courses, 10 schools within the university. We have had 4 convocations, 3 of them chaired by the President of India. So the university is now actually flourishing with the blessings of Gurudev and the guidance and direction of Honorable Chancellor and all the team members who are working very hard for it to happen. We have got now 23 international collaborations. There are frequent international conferences, at least 30 we had in last 2 years, and remarkable journey the university had, in spite of the fact that it's a private university working on limited finances on very specific discipline of providing confluence of ancient Indian disciplines and the modern science. We tend to get the maximum number of application in state of Uttarakhand, which is more than a blessing. It is a blessing to have you here, and you addressed sharing the secrets of how to shape a brilliant life. So, in brief, if you want to say something on as a gist of what you shared today to our viewers. The gist of today's talk was, the theme was the human excellence. The concept behind it is very simple, that as human beings we are unique in the sense that we have got an opportunity to take whichever way we would like to take our lives to. Kans comes from us, but then Krishna also comes from us. Ravan comes from us, but then Ram also comes from us. Angulimal comes, when Buddha also comes from us. We have got a possibility to live either a life of Angulimal, but also have got a possibility to live a life of Buddha. What can we do different to live a life of Buddha than being Angulimal was the real reason of this presentation. Idea of presentation was that human beings are full of possibilities. Pinnacle of this possibility is the human excellence, and how can we acquire it, how can we exceed in our life. And simple summary was that if we have the purpose for ourselves in the life, and that purpose is associated with commitment and right attitude, and then we are living with compassion to make the lives of other people meaningful, then we have got excellence in our lives. That was a really excellent way of summarizing it. And lastly, the adverse circumstances and challenges, and sometimes the kind of news as we have heard recently, there was this plane above the space on Ukraine, Malaysian Airlines. So when we hear these kind of things, a sense of helplessness creeps in, and how the other ideas that you were sharing may work in sync with such threatening situations. Threatening situations would continue to be there. I mean, when Second World War was taking place, Maharishi Arvind was there too. When First World War was there, Maharishi Raman was there too. So I think this world has got both possibilities coexisting at the same time. In the same distance, Angulimal is standing 1 meter away, Buddha is standing. One is height of the evil, one is the pinnacle of compassion. So we have got both things. I think these things, these sort of challenges would also continue to present in front of us. But at the same time, the path that has been offered to us from the ancient wisdom of working with compassion, working with the right attitude, with refinement of our personality and our feelings and thoughts, that can never be compromised. That should always prevail. श्री विनोद अग्रवाल जी का भजन सुनने का मौका मुझे करीब 15-20 वर्ष पहले अपने एक मित्र उमेश गुप्ता जी के माध्यम से दिल्ली में हुआ। मैं इनके कई प्रोग्रामों में भी गया। अपार भीड़ समूह होती है वहाँ पर, और श्री विनोद अग्रवाल जी का नाम भजन गायन के क्षेत्र में बहुत सम्मान से लिया जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि उनका व्यावसायिक ना होना। बिना किसी मुआवजे के भजन गायन करना आज की दुनिया में आसान नहीं है, लेकिन ये श्री विनोद अग्रवाल कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा उन्हें अपने गुरु स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज जी से मिली। श्री विनोद अग्रवाल की आवाज़ और शैली बहुत पवित्र और दिव्य है, जिसका असर श्रोताओं पर जाता है। श्री अग्रवाल जब भजन गाते हैं तो हृदय की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं और
ये उनका मैसेज सुनने वालों के हृदय में उतर जाता है। देखो, जहाँ प्यार हो दो बातें जरूर होती, समर्पण भी होता है और अधिकार की वृत्ति भी होती है। केवल समर्पण हो प्यार में फिर मजा नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे वन साइड गेम। और वो कहते हैं इश्क यदि एक तरफा हो तो सजा देता है। तो वन साइड हो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ नहीं करो, तड़पना तो हमें पड़ेगा। इश्क यदि एक तरफा हो तो सजा देता है, और इश्क यदि दोनों तरफ से हो तो मजा देता है। श्री विनोद अग्रवाल भजन गाते हुए जब विस्तारपूर्वक बीच में शिक्षाप्रद बातें करते हैं तो भजन गायन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। और श्री विनोद अग्रवाल जी का भजन गायन की शैली बहुत पवित्र और दिव्य है, जिसका असर श्रोताओं पर पड़ता है। यदि दोनों तरफ से हो तो मजा देता है, और इश्क यदि चारों तरफ हो तो वो खुदा होता है। यदि आप भारत में लाखों लोगों के बीच में भजन के इस आनंद के प्रवाह को जागृत कर रहे हैं और यहाँ न्यूयॉर्क में है, तो एनर्जी लेवल भक्ति की दृष्टि से क्या आपको कोई विशेष अंतर लगता है? कि मैं जब 8-9 साल का था, मेरे माता पिता ने मेरे दिमाग में एक बात डाल दी कि बेटा तुम्हें बड़े होकर हरि नाम का प्रचार करना है। 24 वर्ष की आयु में जब मैंने अपने गुरु से दीक्षा ली, उनका स्पष्ट आदेश था कि बिना, बचपन से मेरे माता पिता का, बाद में गुरु का, कि बिना किसी भी प्रकार का शुल्क या गिफ्ट भी लिए हुए तुम्हें हरि नाम का प्रचार पूरे संसार में करना है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि पहले समय संयोग नहीं आया, अब ये संयोग आया कि मैं 10 साल से विदेशों में जाकर के मेरे माता पिता का आशीर्वाद दिया हुआ उसे फलीभूत कर रहा हूँ। मेरे गुरु की जो इच्छा थी उसे मैं पूरा करने की चेष्टा कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। शक्ति उन्हीं की है, आशीर्वाद उन्हीं की। गोपाल मुरलिया नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले। विनोद जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आप सभी ITV के दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम हरिस्मरण। विनोद जी, न्यूयॉर्क की धरती पर आपको सुनने का वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क में पहली बार अवसर हुआ और यहाँ विशेष करके श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रवाह रहता है। आपको कैसी अनुभूति यहाँ हुई? देखिए, बड़ी सुखद अनुभूति, और मैंने अपने कार्यक्रम के दौरान जो मुझे यहाँ की एक विशेषता बहुत अच्छी लगी उसको मैंने स्पष्ट शब्दों में जाहिर भी किया कि भाई एक ही इष्ट की उपासना, उसका एक अलग महत्व है। एक ये सब चीज़ एनर्जी लेवल की चीज़ें हैं, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। विनोद जी, अपने गुरु जी के बारे में कुछ बताते हुए, ये जो हरिनाम का प्रचार करने के पीछे साधना के साथ साथ साहित्य से सतत आपका रसमय संबंध भी प्रकट होता है जब आप भजन सुनाते हैं। देखिए, दो चीज़ होती है, एक सेवा और सुमिरन। मुझे सेवा की प्रेरणा दी माता पिता ने भी और सदगुरु ने भी, और सुमिरन का आनंद तो मैं खुद लेता हूँ। जब भगवान का नाम लेते हैं, जब पब्लिक भी साथ बोलती है, तो उनका कहा हुआ, उनका गाया हुआ मुझे भी अंदर से प्रेरणा देता है। मेरे अंदर के तार भी पब्लिक ही झकझोरती है। हम तो मुर्दे हैं, हमें अगर कोई जीवंत करता है तो ये सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों की श्रद्धा और आपका सबका सहयोग, वही बात। विनोद जी, कोई बात जब बार बार दोहराई जाती है तो या तो उसमें रस और बढ़ता जाता है या उसमें एक यंत्रवत सी बात आने लग सकती है। कभी आपको लगा कि मैं इसमें उतने रस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ? जी हाँ, मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं उस मंजिल पे चला हुआ एक राही हूँ।
अभी तक मंजिल पे पहुंचा नहीं हूं। किसी से 2 कदम आगे हो सकता हूं, किसी से 2 कदम पीछे भी हो सकता हूं, लेकिन पहुंचा हुआ व्यक्ति मैं नहीं हूं। इससे नजर मेरा बात फिर कह दूं अनन्यता की। लड़ाई करें, झगड़ा करें, पूजा करें, कुछ भी करें, करें उसके साथ। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। डॉक्टर महेंद्र अमीन और अमिता अमीन जी मेरे साथ हैं और जो भजन के रस प्रवाह में विशेष रूप से उन्हें विनोद अग्रवाल जी की प्रस्तुति में क्या आनंद आता है, ये जानने के लिए मैंने थोड़ा सा उनके साथ का समय लिया। आपसे बात शुरू करते हैं। आप बहुत झूम झूम कर नृत्य भी कर रही थी। इतना भाव आता है जब विनोद जी के भजन सुनते हैं, आंखों से पानी निकलता है, दिल से भी बहुत भाव आता है। और जो लास्ट भजन जो गाया वो तो हमारे लिए ही है। हम हर वक्त सोचते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं वो तुम करने या मेरा नाम हो रहा है। तो सचमुच में मैं दिल से मानती हूँ ऐसा कि वो सच हमारे जीवन में बहुत ट्रूथ है। मेरा सब ऐसे हो रहा है कृष्णा की कृपा से। और मेरे हस्बैंड है फर्स्ट वन हु सॉ हिम ऑन यूट्यूब एंड ही इंट्रोड्यूस टू अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स टू विनोद जी। और उसके भजन, इसकी सुबह उसके भजन से होती है, चार्ट्स लिखते हैं, डॉक्टर है तो काम करते करते, और रात भी आकर उसकी रात भी उसके भजन से होती है। और इतने भजन गाते हैं और ये सबको इंट्रोड्यूस करवाया है। क्या तो ये मुझे बहुत उत्सुकता है डॉक्टर महेंद्र जी। लोग कहते हैं जो इंटरनेट है वो लोगों को भगवान से दूर ले जा रहा है, पर यूट्यूब आपको विशेष रूप से भक्ति के इस खजाने की तरफ ले गई। क्या बात सही है कि यूट्यूब की वजह से ही मैं विनोद जी का भजन सुनने लगा हूँ और सुबह से शाम तक वही सुनता रहता हूँ। और मैं तो यही बता रहा हूँ कि राम जी को मिलना है तो हनुमान जी को पूजा करनी चाहिए, अगर कृष्ण भगवान को पाना है तो विनोद जी को सुनना चाहिए। क्या बात, वही मेरे के राय है। अगर आप कृष्ण भगवान को मिलना चाहते हैं तो आपको मिलने के लिए विनोद जी ही ले जाएंगे। तो मेरी इच्छा हो रही है कि आप दोनों से मैं निवेदन करूं कि विनोद जी से कोई भजन आपने सुना है जो आप बहुत गुनगुनाते हो, तो दोनों एक साथ हमारे दर्शकों के लिए यदि आप गाकर बताएं। तुझे क्या सुनाऊं मैं मोहना, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं मोहना। तो मैं आप दोनों डॉक्टर अमीन साहब और अमिता जी आपकी उपस्थिति में हमारे कई दर्शक जब ये भजन आपसे सुन रहे होंगे तो तुझे क्या सुनाऊंगा मैं के बाद मोहना की जगह उन्हें तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा सुनाई देता होगा, क्योंकि वो धुन उस तरह से बैठी हुई है। तो ये फिल्मी गीतों की धुन पर जो भजन होते हैं उसमें भक्ति भाव आ जाता है, आपको क्या लगता है, या वो फिल्मी गीत की धुन के कारण वही शब्द गूंजते रहते हैं? वैसे तो ऐसे बहुत सारे फिल्मी गीते बनाए हुए हैं, मगर कई फिल्मी गीते ऐसे होते हैं आपके दिल में भी लग जाते हैं, और उसमें से थोड़ा कुछ चेंज करके फिल्मी तरीके से भजन हो जाए उसमें कोई गलत नहीं है। और मैं क्या बोलूँगी, जब मैं गाती हूँ ना तो मेरे सामने मेरा भगवान आता है कृष्णा, तो आंख बंद कर जब कृष्णा को देखो तो याद नहीं रहता है कि वो फिल्मी का गीत है, क्योंकि आई सिंग फॉर हिम, तो भाव आ ही जाता है। क्योंकि जब गाते हैं ना तो हम इसके लिए गाते हैं, जैसे विनोद जी गाते हैं, तो इसीलिए सचमुच ये सच कहती हूँ, ट्रूथ,
कि गाती हूँ तो मेरे कृष्णा आंख बंद करूँ सामने आता है, सामने आता है तो इसको देख के फिर इसके लिए गाते हैं तो आंख में से पानी आता है, भाव आ जाता है, नेचुरली आ जाता है।